Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning, Guruji Ke Saath Guruvar, that we started on 10th of April 2025 under the mentorship of our beloved Guruji, Dr.Liyakat Namole sir. And this is our second series after the successful completion of first 100 webinar series. So we are studying case taking. The last lecture, sir has guided us and taken the part one. So we are continuing the session, and I am blessed and honored to welcome and introduce sir. Though sir doesn't like it every time. So Dr. It's boring. People are waiting now. But there are people who are new, so that's why I would like to share something about sir. So Dr. Liyakat Namole sir is an most eminent and passionate homeopath from Nashik, Maharashtra. Sir has more than 31 years of vast experience of homeopathic practice. Sir has conducted more than 500 seminars as well as webinars all over. Sir has conducted nationalized seminars on specific diseases like diabetes, skin, infertility, pediatric, etc. Sir's motto is to convert 10,000 GPs towards homeopathy. And till now, sir has been successful in converting more than 2,000 GPs towards homeopathy if they are not practicing 100% homeopathy along with general practice. So, and sir is pioneer of the group Ignited Minds by PHF, where more than 2,500 doctors learn on daily basis. Sir has discovered an unique method of learning known as MML, that is a mind method by Dr. Liyakat. The focus of MML is practicing solely on mind. Empathy is the mantra. Dr. Liyakat sir is the master of gestures. He is one who has introduced gestures in homeopathy. Through sir's keen observation and huge experience, he has found out many original gestures, which is the blessing to the world of homeopathy. And sir is author of bestseller book that is Humanopathy, of which 20,000 copies have been sold already, and sir is working on the second edition. So now, without wasting much time, let us learn from sir. Welcome, sir. Over to you. Thank you. So I believe that many of you were there in the first lecture that we had taken. So let me start with the PPT directly. Okay. Last time we spoke about case taking. As we had promised that this series of 100 days Guruji Ke Saath Guruvar, it's going to be the practical organ and practical mathematical. So everything that is taught by Dr. Hanuman sir, we're going to have the practical application of that. Okay. Yes. So we spoke about case taking last time. Okay. We spoke about the conversation, the observation, and collecting of information last time. See, as we know, from aphorism 83 to 90, it is general instructions. 91 to 93 patients coming from other physician. We will talk about this now in this session. Okay. See, 89. This we have taken the last time, right? Mana, last time we have taken better this answer. Yes, sir. We have taken when the patient. See, we have taken the. Yeah. The very important thing out here is when the patient for. It is on him we have chiefly to rely for a description of his sensations, except in the case of feigned diseases. What we say, what Dr. Hanuman has said,
we have to rely on what the patient is saying. The sensations are to be taken off the patient, except when the patient is like feigning, like, if it is a psychiatric case, then it is different thing. Okay. Or if the patient is feigning, otherwise the sensations per se, we have to take from the patients. Okay. Please remember this thing. Otherwise, we become biased. We don't trust the patient. Right? I say, trust the patient. I have also not trusted the patient. I have trusted the patient. I've got more benefits by trusting the patients than by not trusting him. Please remember. Okay, so you have to trust the patient. Trust whatever the patient is going to tell you. Okay, 1/1000 is going to faint. That is different. Otherwise, trust the patient. Okay, so as by these results given or him accord and answers to inquiries. See what is it? Given of his own accord. So he says whatever he has suffering and whatever. And in answer to inquiry. So what questions we make? Furnished and requisite information and traced a tolerably perfect picture. Please remember, tolerably perfect picture. Okay. Of the disease. The physician is at liberty and obliged, if he feels he has not yet gained all the information he needs, to ask more precise, specific questions. Means you can ask more specific questions also. Okay. If you have not understood. So what Dr. Elman has said, if you have understood the case, unnecessarily do not try to get more information from the patient. Don't ask unnecessary questions. That's maybe going to make the patient uncomfortable. Many times that I've seen that you keep asking the questions to the patient, more questions to the patient becomes uncomfortable, relatives become uncomfortable, and then what happens is that they do not turn back to you. Many times that we have seen in natural many times that we have seen in natural mood, if you ask them questions, she reveals the secrets, they tell you the things, and they become uncomfortable. They do not turn back to you. So please remember, if you don't have that much of understanding, study more. Join courses. There are a lot of doctors who are teaching. Talk to them. Learn to understand with minimum and necessary information. Please remember. So whatever the patient says to me, what I have understood in life is that whatever the patient says to you is enough for you to understand him many times. Okay. Almost in 95 to 98% cases, when the patient talks to you and you ask very minimum question as to since when you are suffering and then what is your concern and like how does it bother you, that is enough for you to prescribe upon. In 95 to 98% cases, mind you friends, only 2%, or let us say if you're not as senior as I am or as senior as my colleagues, then let us say 90% of the cases you should be able to crack. Okay, you should be able to come to 2, 3 remedies at least, if not one. Okay, by what the patient talks to you. Okay, and you ask the minimum questions that I asked. Okay, anyways. So when the physician has finished writing down, okay, this was the old way we record the cases, but still writing down, we do write down, we do underline. When the physician has finished writing down these particulars, he then makes a note of what he himself observes in the patient. This I have taught already, that what you should observe. Yeah, that is what is my main way of understanding the patient. You observe the patient, keen observation, and ascertains how much of that was peculiar to the patient in his healthy state. This italics are mine. Please remember. So what you observe, what the patient has told you, what information you have traced from him, what you have observed from the patient, this we understand. And ascertain how much of that was peculiar to the patient in his healthy state. Like if the patient is very much irritable, if the patient is very much mild, let us say, if the patient behaves to you in a very affectionate way. So is this also there when the patient is healthy?
If not, then these two things you must understand. Then the remedy should cover both the things. Okay? So peculiar things from the healthy states, peculiar things which are not present when the patient is healthy. So what Dr. Henneman has said, we have to understand the deviation of the health. Okay, so this is why we have to understand as to how the patient is usually in his normal state, so that it becomes easy for us to understand the deviation, also the so-called constitution of the patient, as to this person is like this in the healthy state, like this person is benevolent, this person is charitable, this person is very suspicious. You can say this person is very loquacious, this person is very friendly, very sociable in the healthy state, and in the sick state, he doesn't want to talk, he just wants to lie down, he doesn't want to talk, he doesn't want to see the mobile, he doesn't want to see the mobile television, doesn't want to hear to the songs. So usually a guy who was very happy-go-lucky, very outwardly, very friendly, very loving, becomes totally indifferent, totally no to the amusements, the things that used to amuse him regularly. This is something very peculiar. This is peculiar of Ignatia, right? So the certain things like this you have to understand. Okay. Now the footnote, for example, how the patient behaved during the visit, whenever whether he was morose, quarrelsome. Quarrelsome you have to understand even when talking to the patient. Like you say, what do you like? Do you like sweets? Some people say, why should I like sweets? Or let us say, do you get angry? Why not? Why not? Do you get irritated in the I asked a lady, do you get irritated during the menses? Why not, doctor? Why a lady should not get irritated during periods? We bleed so much. I said, yeah. I said, it's because we require normally. Yeah, but then you must understand. I said, great. So I understood. I did not really need to ask the relatives whether this lady is quarrelsome, whether this lady is argumentative. I did not need. I just took the rubric quarrelsome, argumentative. Right? Mood, repulsive. Every question I would ask, you would say, why not? I said, what do you think about the disease? I don't want this at all. I said, it's not in your hand. Yeah, even then I don't want this disease. Why should I have this disease? I said, mood repulsive, simple. Do you understand? So when the patient talks, how the patient talks, what words he's choosing, what reactions he's giving to your questions, also makes you understand the mental mentals of the patient. Okay, so whether the patient is quarrelsome, hasty, again we understand. Lachrymose means whether he was crying, anxious, despairing, or sad, or hopeful, calm, etc. Whether he was in a drowsy state or in any way dull of comprehension. Now, dull of comprehension is very important. Okay, so that is why we do not allow anyone talking in between, interrupting when the patient is saying. Many times, this is why you should instruct the relatives as to, let the patient talk. If the patient is saying, you ask any question, like how much is the age, then he would take time. Maybe it's like 50 to 60, doctor. Then we say, oh, 50 to 60, come on, he'll take time. Or if you say, since when are you suffering? Doctor, I'm suffering since almost a month or 3-4 months. A month or 3-4 months is like huge. So then we understand, oh my God, he's not in his senses totally. He's become dull. He has lost his understanding, right? Then the calmness also we understand. The comprehension. Like you ask a question and then they don't understand. We ask, घर पे कौन कौन है? So they don't understand. घर पे मतलब, तो then we say कि बाबा फैमिली में आपके कौन है? फैमिली में तो है, फैमिली है. Then you can take simply, this can be secretive or this can be slow of comprehension, because we are asking the information about family. Then we say,
हमको जरूरी है ये पूछना, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कहीं पर आपके लाइफ में, एनीवेयर इन योर लाइफ, डू यू हैव एनी स्ट्रेस इन एनी रिलेशनशिप? स्ट्रेस मीन्स डॉक्टर साहब, सो देन वी अंडरस्टैंड कि यार इसको टेंशन समझ में नहीं आ रहा है, तो डलनेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, दैट ये पर्सन अपने साथ कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है। ओके, एक ऐसा है कि ये खुद भी पेशेंट बता देता है कि डॉक्टर साहब मेरे को आजकल समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है मेरे जीवन में, मतलब मुझे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ना मैं टीवी देख रही हूँ, बस काम भी जबरदस्ती कर रही हूँ, बस पड़े रहने का मन हो रहा है। तो क्या हो जाता है ना, हम लोग वी जंप टू द rubrics बिफोर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो एनीबडी, इफ द पेशेंट इज सेइंग बस मैं काम जबरदस्ती कर रही हूँ और कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये नहीं कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन नहीं आ रहा, मेरे को बस पड़े रहने का मन हो रहा है और स्लो हो रहा है मेरे से काम, तो अपन क्या रूब्रिक लेंगे? हेलो, एनीबडी, एनी रूब्रिक फॉर दिस? हेलो, आर यू विथ मी गाइस? Yes, sir. आर यू विथ मी? एनीबडी, हेलो, एनी रूब्रिक? हेलो, एनीबडी इन दिस केसेस, पड़े रहने का मन हो रहा है, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है? उठने गाइस, का मन नहीं कर रहा है, मतलब बेड रिमेन desire to remain. desires to yeah. Very good. Now let us see where we fail. Where desire to remain in bed, है ना? अब मैं आपको समझाऊंगा कि this is not bed desire to remain in. This is torpor, or this is simply, this is torpor, not bed desire to remain. Okay, okay. क्या हो जाता है ना, we just take word to word. मरीज ने ऐसा कहा कि मुझे बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बस पड़े रहने का मन हो रहा है, या बिस्तर से उठने का मन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी बोलेगा ना। मरीज ने कहा कि मेरे से आजकल बिस्तर से भी नहीं उठा जा रहा, मैं पड़े रह रहा हूँ, तो मरीज ने कहा तो बिस्तर तो बेड, या पड़े रहने का मन कर रहा है, तो सीधा बेड डिजायर टू रिमेन इन लेता। नो, दिस इज सिंपली डलनेस। ओके, and if little more you understand, then this is torpor. You can simply take dull, कि डॉक्टर साहब दिमाग ही नहीं चल रहा है, क्या पढ़ रहा हूँ, पढ़े कहीं भी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ये क्योंकि you must understand what is bed. Bed is something that gives you comfort. Whether this patient is comfortable, hello, he is not comfortable, No sir, he is no. not comfortable. वहीं से शुरुआत करो, क्योंकि माइंड में बेड है। हेलो, इफ दिस वाज देयर इन द स्लीप, then you would take it directly. Hello, do you understand? But this rubric is there in the mind, so you must mind when you are dealing with the mind rubric of the record, or when you are taking the mind of the record of the patient. Please understand, this is where mind method fails, and then we try and search for shortcuts like formulas, and then we go to thirst and whatnot, and then we move here and there, we go wayward, right? Hello, are you with me? Yes sir. So this what I said about the case which I told is what? Dullness, dragging himself, है ना? जबरदस्ती कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं घर का काम नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, अपना थोड़ा बहुत कर रही हूँ, ये क्या है?
ट्रैकिंग, अभी इसमें से बताओ, आई विल टेल यू रेमेडी माइक्रो सेकंड। बोलो इसमें से, बोलो टॉर्पर में से, बोलो कौन सी रेमेडी है? Anybody wants to try? Hello. Carcinosin. Carcinosin. Why? Why carcinosin? Hello. Anybody else? Hello. Why carcinosin? Okay. Anybody else wants to try, or should we move ahead? Line लो, पेन लो, लिख लो। जबरदस्ती कर रहा हूं, मन नहीं है, खींच रहा हूं अपने आप। ये दो लोग बोलते हैं, सेपिया खींचता है अपने आप को और जेलसेमियम खींचता है अपने आप। टॉर्पर में सेपिया है क्या? नहीं है। नहीं है सर। इसी जेलसेमियम। ये लाइन जो है ना, ये 99% आपको बताता हूं मैं, 99%, not 100%. Again, when I'm telling about some line, it is 99%. So 99 out of your 100 cases will get results with this. तो मैं अपने आप को खींच रहा हूं, that is जेलसेमियम। सेपिया भी अपने आप को ड्रैग करता है, ये याद हो। फिर बाकी चीजों का अलग है, कार्सिनोसिन का अलग है। कार्सिनोसिन क्या है? वो रिस्पॉन्सिव विदाउट इंटरेस्ट। कार्सिनोसिन रिस्पॉन्ड, कार्सिनोसिन का 1-to-1 में प्रॉब्लम आता है, कार्सिनोसिन का प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आता है ज्यादातर। समझे? कार्सिनोसिन रिलेशनशिप का मारा होता है, हार्मोनी, डिजायर, वो सब एलिमेंट्स फ्रॉम सेपरेशन, एब्सेंट फादर सिंड्रोम, सब चीजें आप लोग हैं। मार्टियर मतलब वो क्या है ना, रिलेशंस के अंदर ही अटका हुआ है ना? वही अपना लोगों के लिए अपना बलिदान दे रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसका सारा इशू जो चलेगा ना, वो डिल्यूजन, ही डजंट हैव प्रोटेक्शन, है ना? उसका सारा वही उस पर ही चलेगा। समझे? तो कार्सिनोसिन जिंदगी भर प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एब्सेंट फादर सिंड्रोम ना, तुमको कौन देता है प्रोटेक्शन? बाप देता है ना? और उसका एब्सेंट है, उसके लाइफ में उसको बाप ही नहीं मिला है ढंग का, जो भी है सप्रेस किया वगैरह, दैट इज कार्सिनोसिन। वो उसमें जाएगा रिलेशन के अंदर। समझे? सीपिया ड्यूटी के अंदर जाती है। सेपिया का जो इशू रहता है वो ड्यूटी, अब्यूज, ओवर यूज, है ना, टू द लेवल ऑफ क्या है वो, वोर, बीइंग वोर्न आउट। सेपिया उसके इर्द गिर्द घूमते रहती है। समझ रहे हो? जेलसेमियम जान नहीं है, छोटी सी उम्मीद पर चल रहा है, टॉर्पर की लेवल पर, मतलब उसके हाथ पैर नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, दिमाग भी कम चल रहा है, फिर भी अपने आप को खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। ओके, एनीवेज आगे चलते हैं। मैं कैसा, मैं डायरेक्ट केसेस दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा पाता, मैं बता ना, उसके लिए मैं बोलता हूँ वो जो लेक्चर्स होते हैं हमारे, वीडियो जिसमें हम बता सकते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट होता है, यहाँ पर नहीं दिखा सकता, यूट्यूब पे जाने वाला है। ठीक है, एनीवेज, तो वेर वही कहा था, डल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन में अपन बात चल रही थी आपकी। वेदर ही स्पोक हॉर्सली और इन अ लो टोन, है ना? हमने हमेशा टोन के बारे में सब पेशेंट बताता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को बोलते रहता हूँ, टोन पे ध्यान दो। पेशेंट बात कर रहा है, धीरे धीरे कोई चीज पे एटीट्यूड होता है, नहीं शक्कर कहाँ खाती मैं। अपन पेशेंट बोलते ना कि आपको भी वजन कम करना है, शुगर कम करनी, तो आपको शक्कर मूड कम, शक्कर तो खाती ज नहीं मैं डॉक्टर साहब। मतलब अपन बोलते कि भाई हाँ मुझे सुना जाता, आप ठीक क्यों? बीच में ही पेशेंट की आवाज बढ़ जाती है, आप देखो बीच में कब होती है, ये ध्यान दो आप, इधर ध्यान दो, वो बहुत मायने रखता है। वो पेन लेके नीचे लिखते वक्त बैठो, वो करोगे तो फिर मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल, बहुत मुश्किल होगा। मतलब पेशेंट बोल रहा है, आप लिख रहे हो, पेशेंट इज सेइंग आई डू नॉट ईट शुगर, गॉन, अच्छा ये शुगर नहीं खा रहा है, ओके आई एवर्जन टू शुगर या व्हाट, गए आप काम से, फुस, देन यू गॉन। ओके, तो लो टोन, इनकोहेरेंटली, मतलब है ना, और हाउ अदरवाइज डिड ही टॉक, हाउ अदरवाइज डिड ही टॉक, ये हमारा फोटे है ना? सो व्हाट वाज द कलर ऑफ हिज फेस, आईज एंड स्किन जनरली, what degree of liveliness and power that
was there in his expression and eyes. ये भी देखो कितना काम का है। और अपन नजर नहीं मिलाते पेशेंट से। मेरे कई स्टूडेंट है सब, हाँ डॉक्टर साहब, अरे वो घर पे रखो, पेशेंट तुम्हारे को जज कर रहा है नहीं कर रहा, यू मस्ट लुक इनटू द आईज ऑफ द पेशेंट, यू मस्ट ऑब्जर्व द पेशेंट कि उसके गले में क्या है, आंख में ना उसने चश्मा कौन सा पहना है, कान में क्या है, नाक में क्या है, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने हैं क्या, उसका बनियन दिख रहा है क्या, वो फीमेल्स के अंडरगारमेंट्स दिख रहे हैं क्या, मतलब सरसरी एकदम ऐसा ग्रॉस। हम लोग पढ़ाते हैं तो मैं आई ऑलवेज से सी द मैक्रो एंड द माइक्रो। मैक्रो इज व्हाट यू ऑब्जर्व विद द नेकेड आईज, फॉर दैट यू शुड हैव नेकेड आईज। नेकेड आईज का मतलब क्या होता है, जो हर चीज देख रही है। ओपन आइज मतलब खुली आंखें, लेकिन नेकेड आइज का मतलब क्या, व्हाई देयर इज अ वर्ड ओपन आइज एंड व्हाई देयर इज अ वर्ड नेकेड आइज। हेलो, व्हाई दे शुड से ओपन आइज, नंगी आंख क्या शब्द है। हेलो, are you understanding why do we say naked eyes? Eyes were wide open, that is different. Naked eyes मतलब the one who observe everything, whether you call it shameful, shameless, whatever let the patient call, yeah, with decency, without making the patient really uncomfortable. Of course, not uncomfortable at all. You're not supposed to make them uncomfortable, but you must observe, and that you have to learn the trick how to observe. फटाक से मतलब एक नजर में सरसरी तुम्हारे आ जाना चाहिए, फट 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 के यार इसने ब्लाउज, ये इंसान ने यार मस्त शर्ट पहना हुआ है व्हाइट कलर का, उसके अंदर जाली वाली बनियान है, वो भी ब्लैक कलर की, शर्ट इसका व्हाइट है, नीचे व्हाइट पैंट है, कान में बाली है, इधर सोने का है, इसके ना मुंह में पान था, मतलब थोड़ा सा ये था, हाथ के अंदर अंगूठी है, घड़ी इसकी रोलेक्स की है लेकिन डुप्लीकेट है, क्योंकि रोलेक्स की घड़ी तो अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, 1.5-2 लाख रुपए से ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। बाल कलर के कले हुए किए हुए, खत्म बात। इतना फटाफट। इसके बाद मोबाइल है, इसका कवर ऐसा है मोबाइल का, इसकी रिंगटोन ये है, इसकी नमाज, इसके रिंगटोन के अंदर नाच सुनाई दे रही, इसके रिंगटोन के अंदर जय श्री राम सुनाई दे रहा है, इसकी रिंगटोन के अंदर सरगाई कटिया सुनाई दे रहा है, इसकी रिंगटोन के अंदर डॉन 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 सुनाई दे रहा है। ये फटाफट फटाफट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, और ये सब चीजें रजिस्टर होके ये तुम्हारे साथ चलनी चाहिए केस टेकिंग में। फिर उसके साथ में तुम पेशेंट को एनालाइज कर सकते हो। हेलो, और फिर इवेल्युएट कर सकते हो बाद में कि वेदर दिस इज फॉपिश। जैसे अभी कान में बालियां है, इधर गोदा, ये सब फॉपिश तुम्हारे मन में आएगा, क्योंकि स्टाइल भाई है ना। उसके साथ अगर नखरा चल रहा है, जैसे उसने यहाँ की बाली यहाँ पर पहनी हुई है, नखरे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो देन इट इज पॉपुलिश। और वेदर दिस इज वैनिटी, बहुत ज्यादा रंग छुपा हुआ है क्या, वैनिटी है, क्योंकि बहुत मेकअप चोपड़ के आना इस वैनिटी, घर पे आके पानी निकलने वाला है, तो रूज लगाया है, फिर नीली पेंसिल है, जो भी है, वही कलर की समझो, इधर क्लिप है वही कलर की, यहाँ की वो होती है वो औरतों में, क्या कहते हैं आप लोग उसको, मुझे पता भी नहीं, वो होता है इधर चमकने वाला, वही कलर की नेल पेंट है, वही कलर की रिंग है, वही कलर का ड्रेस भी हो सकता है कई कई बार। आई हैव वन लेडी, पंजाबी लेडी, वेयरिंग ब्लैक, student of mine wearing black shirt, and then inside the inner cloth was like shiny. I said, how come the inner clothes could be shiny? And she's coming to her, sir. I was like, oh my God. I was awestruck. You understand? But then it should fly, it should, it was like this line was shiny, shiny, shiny. I said, oh, tuck, tuck, itne aise chamki. I like, my God. I was awestruck. I said, why she is coming to meet her sir in such clothes? That is something you have to understand. Okay, anyways. And what degree of liveliness and power was there? Expressions and eyes. Power. पावरफुल आंखें होती है ना एकदम, मतलब मोहक आंखें होती, पावरफुल रहती है। मतलब कुछ लोग ऐसे डल आंखें रहेंगे, पावर आंखें मतलब, पावर का मतलब चश्मा नहीं, पावर तो विजन नहीं बोला है डॉक्टर साहब ने, यहाँ पे डॉक्टर ने आईज बोला हुआ है, आंखें, नजर नहीं। हाँ, समझ लो, तो पावर है पावर, वो क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। हेलो, समझ रहे हो? अरे किसका फोन चालू है रे, तुम लोग प्लीज यार म्यूट क्यों नहीं कर दे रहे बीच में, कौन है रे? केलं केलं मी. एक झोपा काढता का रे, कोणी केलं ते अनम्यूट रे यार, माझं सगळं निघून जातं रे, काय मूर्ख लोक आहे, कितीदा सांगा सर.
Anyways, what was the state of his tongue? His breathing. Breathing again, ये तो अपने को पता है, स्मेल आ रही है या फिर वो फास्ट बात कर रहा है या बात करते करते सांस लग रही है या सांस रोक ले रहा है कुछ कुछ सवालों पे, कि जैसे आपने पूछा कि कैसे चल रहा है आपका शादीशुदा जिंदगी, कैसे सांस रोक लिया, पता चलता है आप लोग यार ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, मतलब आप लोग पता चलता है कि अरे भाई ये डिस्टर्ब है यहाँ पे। स्मेल ऑफ हिज माउथ एंड हियरिंग अगेन, कौन सी बात सुन रहा है, कौन सी नहीं सुन रहा है, कौन सी नहीं सुनने का नाटक कर रहा है, कौन सी बात के लिए नजरअंदाज कर रहा है। हियरिंग का मतलब सिर्फ उसका कान सही सुन पा रहा है कि नहीं ये नहीं है, कौन सी बात को सुन के ना सुना कर रहा है, कौन से सवाल को जवाब दे रहा है, कौन से को नहीं दे रहा है, वो भी हियरिंग में आता है। व्हाट वाज द pupils dilated contracted, ये सब आप लोगों को पता है ना, dilated contracted ये सब को देखो, how rapidly and to what extent they alter in the dark and the light, what was the character of the pulse, what was the condition of the abdomen, how moist, ये आप लोग पढ़ लेना बाद में, ठीक है, ये physical observations। and anything else, last वाली लाइन देखो, and anything else in him that may strike the physician as being remarkable. Again, please remember, striking is the word Dr. Herman uses always. SSUP, striking, singular, unique, peculiar is what Dr. Herman has said in organ of medicine, not PQRS. PQRS तो अपने बनाया हुआ है, peculiar, queer, rare, strange. But actually it's SSUP, striking. जैसे I was struck by the, the shiny clothes of the lady, the student, the inside cloth and things like, okay. Now, let's understand patient comes from the other physician. In chronic diseases, what do we do? What Dr. Herman says, stop the medications. Of course, you have to stop the medications to get uncontaminated. Dr. Herman is talking about another homeopathic physician, not allopath. Stop the medication to get uncontaminated symptoms and furnish pure picture of the disease. Give placebo. Another, in acute case, what do we do? So in chronic case, he says, don't give anything, give placebo. All the patient after 15 days. 1 week, observe if he's in trouble. Let us see. But then if you really want the picture, then this is one really very good way of understanding. Though I do not follow this totally, because I try to derive at the picture of the person from before, because we take the concern of the patient, we take what is bothering the patient, what is present in the case, how was the patient once before, what is the ailment, what has gone through it, what things he has gone through in life. Then you don't really need to stop the medicine. I mean, make the patient wait for 15 days, because if the patient is coming with arthritis, with severe pain, we can't afford doing that, right? So in that case, you have to differentiate. That is wiser. That I cannot explain here. Okay. So for that, you have to talk to Dr. Pranita. She will take you to my lectures where I'll show you the live cases actually, where the patient is coming from another homeopath. I get cases now coming from 6 homeopaths, 7 homeopaths, famous doctors, like 5 famous doctors and all. Such cases also comes to an, and then in that case also we can deal without really stopping the medicine. But this is a classical way of looking at it. Okay. But if the patient is uncomfortable, don't do this. The patient is in pain, if the patient is coming with severe sciatica or migraine or severe bleeding or something like that, where you have to really treat that condition, then you have to differentiate between the state before and now. And then describe on his mainly his concern कि डॉक्टर साहब मैं तो इस चीज के लिए गया था, इसमें नहीं फर्क पड़ा, तो देन अपने को वो लेना है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टेट ऑफ माइंड नाउ एंड बिकॉज अगर से कोई पेशेंट 10 साल के बाद में आ रहा है बोल रहा है कि इफ ही कम्स विद डिस्पेयर, देन डिस्पेयर इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल थिंग, है ना? कि अब तो मुझे लगता है कि नहीं फर्क पड़ेगा डॉक्टर साहब, साल भर आपके पास भी दवाई ले रहा है पेशेंट और बोलता है इफ ही ट्रस्ट यू एंड देन इफ इज टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम यू एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर इफ ही सेज कि डॉक्टर साहब अब तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ठीक होगा, तो देन इट्स कॉमन फॉर द पेशेंट टू फील despair of recovery. You can't take despair of recovery there. So you have to go to the roots, the beginning of the disease, and
and mainly again the concern of the patient and how the patient is dealing with the things, you know. Anyways, now coming to acute, just form an apprehension of the complete picture of disease and prescribe if you cannot wait or delay. क्या बोला डॉक्टर साहब ने? जो भी तुम्हारे सामने है पिक्चर, उस पर तुम दवाई दो. Treat and save life. So whether it is because of the medicine that was given to him, and then combining together of everything that is there right now in front of your eyes. तो क्या बोला है डॉक्टर साहब ने? Complete picture of the disease. Just form an apprehension of the complete picture of the disease and prescribe if you cannot wait. Medicinal disease with severe side effects by use of inappropriate drugs. Severe acute disease आते ना अपने पास में steroid के लेकर वगैरह. So then we have to even remedy the side effects of the steroids and all that has happened, or the antibiotics that were given, or whatever the drugs were given, like anti-cancer drugs were given, chemotherapy. You have to take into consideration even that in such cases where it's a life-threatening state. So you have to take the picture, total picture of that. Yeah, if the swelling is there because of there are certain anti-hypertensive drugs जिसके वजह से पैरों में सूजन आती है वगैरह. So if you stop and change the drug, वो चला जाता है, तो उसको तुमको देने का जरूरत नहीं. Anyways, we do not prescribe for the edema, right? But we do prescribe on the mind. तो माइंड तो लो, क्योंकि अपने उसमें एलोपैथिक दवाइयों के कारण हुए मेंटल सिम्टम्स पे तो दवा अपने पास में कुछ उसका है नहीं, डेटा नहीं है, उसका प्रूविंग ही नहीं हुआ है ना एलोपैथिक ड्रग्स का. तो उसके क्या पेशेंट के स्वभाव पे असर होते हैं वो अपने को नहीं बोलते आता है. तो देन अपने को सारी चीजों को लेकर के दवाई देना है. वी हैव टू ट्रीट दैट. Obvious cause, chronic or acute, what to do? Okay, when the causation is known. So if the disease has been brought on a short time, or in case of a chronic affection, a considerable time previously by some obvious cause, then the patient or his friends, when questioned privately, will mention it either spontaneously or when carefully interrogated. मतलब आपके पास में कोई समझो स्ट्रोक का पेशेंट आ गया, फिर पेशेंट ने नहीं बता पाया, तो उसका क्लोज फ्रेंड आपको बताता है कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट की बेटी भाग गई, उसने लव मैरिज कर लिया, या निचली जाति के लड़के से भाग गई, या किसी और के साथ चली गई, या जो भी है. तो वहां से आप लोग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, देयर यू कैन प्रिस्क्राइब. कभी कभी पेशेंट भी बोलते बोलते था. अभी जैसे बताता हूँ, जैसे 3-4 दिन पहले ही पेशेंट था, वाज लाइक इमरजेंसी थी. द पेशेंट वाज इन बैड स्टेट, लाइक सीवियर neck pain, okay, with palpitations and very scare, frightful. Okay, the lady was very frightened to death, and then I asked कि बेटा क्या हुआ, बिकॉज उसका सांस लग रही, सीने में दर्द हो रहा है, गर्दन दुख रही. तो मैं बोला बेटा ऐसे कुछ हुआ कि तेरी लाइफ में जो तेरे को दिल को तकलीफ हो, या किसी ने तेरे को ऐसी कुछ बात बोला, या तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है. देन शी लुक्ड अप, वीडियो कॉल पे बात चल रही थी. तो मैंने कौन है साथ में? आपके पति है? हाँ हाँ. तो मैं समझ गया. उसने उधर देखी, मैंने ये यहाँ पे बोल नहीं पा रही है, ठीक है, बट उसने इशारा भी कर दिया, और इमोशनली उसको तकलीफ हुई है किसी के बोलने से, जिसके कारण उसकी नेक में तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, सांस चल रही है, इतनी लेवल तक कि उसको हर्ट हुआ है. तो इतनी लेवल तक हर्ट हुआ है तो केस खत्म हो गई, ठीक है. तो आई गिव हर स्टेफिसेग्रिया, सिंपल. डीडी वाज देयर इन माय माइंड, इग्नेशिया, बट स्टेफिसेग्रिया इसके लिए दिया बिकॉज उसने वहां देख लिया, इशारा किया, मतलब कम्युनिकेटिव रूब्रिक था. हेलो, पेशेंट ने इशारा कर दिया आपको, तो इसका मतलब क्या है? पेशेंट ने आपको कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है. तो मेरे दिमाग में स्टेफिसेग्रिया और इग्नेशिया चल रहा था, बट आप देखो, आई जस्ट डिफरेंशिएटेड विद कम्युनिकेटिव. ऐसे इग्नेशिया करेगी नहीं करेगी मुझे पता नहीं, स्टेफिसेग्रिया कम्युनिकेटिव में है. देखो, कम्युनिकेटिव में स्टाफ है, इग्नेशिया नहीं है. तो जब डीडी चल रहा है तो कम्युनिकेटिव में स्टाफ है, स्टाफ ने कम्युनिकेट कर दिया ऐसा देख के, इशारा करके, तो खत्म हो गई बात. I gave her staphylococcus and she could sleep well. Next day, then I took her case.
she had hypothyroid, matlab these things were going on in life, and then again the remedy turned out to be stepisegrine only. So then I gave her SL, and then after 15 days I gave her stepisegrine 200. After 1 month, thyroid levels were coming down, and then I reduced the dose from 125 to 100, and then now she's on 50, thyroxine 50. अभी एक आध महीने के अंदर thyroxine 50 बंद हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा फाइनर चीजों के अगर हम ध्यान देते हैं, और आपको अगर नॉलेज होता है, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ रेपर्टरी, कि कौन से, मतलब क्या होता है ना, रेपर्टरी इज वेरी अनबायस्ड. मैट्रेमेटिक का बायस नहीं है, लेकिन मैट्रेमेटिक का अंदर क्या होता है ना कि वो ऑथर की अंडरस्टैंडिंग दी हुई है. जैसे प्रूविंग अनबायस्ड है, प्रूविंग तो डायरेक्ट रिपोर्ट है. रेपर्टरी उसको स्केमेटिक तरीके से रखा हुआ किताब है, बुक है, इजी टू सर्च वाली किताब है अपनी रेपर्टरी. तो उसके अंदर अपने को पता होना चाहिए कि फट से यार मेरे दिमाग में स्टैफ और इग्निशन चला, तो मेरा स्टैफ इग्निशन, उसने जब मेला आ रही, इसने तो इधर इशारा किया कि हस्बैंड है, तो कम्युनिकेट कर दिया इसने. तो मैंने यार ये तो स्टैफ है, क्योंकि कम्युनिकेट भी हो गया. देन ऐसे नेक भी है, मतलब मॉडिफिकेशन भी चल रहा है, कहीं पर उसकी मानहानि भी हुई है, मतलब उसका ऑर्डर ऑनर वुंडेड भी है, हो सकता है. एंड देन नेक्स्ट डे प्रूव हो गया. नेक्स्ट डे व्हेन आई टू करके इस आराम से, बिकॉज शी स्लेप्ट वेल, तो इवन हस्बैंड फेल्ट कि अरे, तो मैं उसको बोला कि आते को अच्छा लगेगा बेटा, अच्छा लगता है तो कल कॉल करो, अपना आराम से बातें करेंगे. तो हर हस्बैंड ओनली टोल्ड हर कि टॉक टू दिस डॉक्टर. He'd only send me the consultation next day morning. तो उसको पता है कि भाई 2000 he'd only send उसके अकाउंट से, जबकि रात को मैंने 1000 ले चुका था. अगेन ही पेड 2000. फिर डॉक्टर से बात कर, एंड देन दे सॉ द रिजल्ट्स, एंड देन बाद में तो इवन द हस्बैंड इज टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम अस. यू अंडरस्टैंड. ये छोटी चीजें हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है. और छोटी चीज छोटी नहीं होती. मैं हमेशा एक शेयर कहता हूँ, याद है ना, कि माना कि प्यार में थोड़ी कमी रही होगी, मगर प्यार में मेरे दोस्त थोड़ी कमी भी थोड़ी नहीं होती है. उसको हम होम्योपैथी में कन्वर्ट करते हैं कि माना कि केस टेकिंग में थोड़ी कमी रही होगी, मगर केस टेकिंग में मेरे दोस्त थोड़ी कमी भी थोड़ी नहीं होती है. एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्लाइड्स. राइट. सो व्हाट इज द फुट, क्या कहते हैं फुटनोट. फुटनोट क्या कहती है, एनी कॉजेस ऑफ अ डिसग्रेसफुल कैरेक्टर. देखो, which the patient or his friends do not like to confess. ये भी होता है कभी कभी, है ना, कि मतलब the patient has extramarital affair, or he has the habit of going to prostitutes, or whatever, like गांजा पीता है, शराब पीता है, जो भी है. तो ये disgraceful character, they don't like to confess, at least not voluntarily. The physician must endeavor to elicit by skillfully framing his questions or by private information. Skillfully framing is the question. Remember, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं पहले तो मैं पूछता था जब मैं थोड़ा सा इमेच्योर था, बट सिंस लॉन्ग टाइम आई आस्क कि मैं आपको कुछ पर्सनल सवाल पूछूंगा, क्या पूछ सकता हूँ क्या, आपको कंफर्टेबल लगे तो जवाब देना. तो देन पेशेंट सेज बोलिए, तो देन व्हाट आई डू ना, आई फ्रेम द, हाउ डू आई मेक देम अंडरस्टैंड कि बाबा आप कैसे धीरे धीरे जा रहे हैं. मैं पहले पूछता हूँ कि आपके पीरियड्स कैसे हैं. तो लोग बोलते हैं यार पीरियड्स तो कोई बहुत पर्सनल क्वेश्चन नहीं ना, लेकिन आप उसको शुरुआत ही ऐसे करो कि पीरियड्स कैसे है, अच्छा पीरियड्स में आपका मूड कैसा होता है. फिर पूछने का धीरे में, अच्छा आपकी फैमिली में और कौन कौन है, अच्छा ननद भी है, तो आपकी जमती है ननद के साथ या कुछ प्रॉब्लम्स है. तो फिर पेशेंट समझ गया ना, मतलब आप धीरे से घुस गए घर में, पता भी नहीं चलता है. अगर गाइस देते थे ना, यहाँ उसकी आपकी नींद कैसी है, आप कैसे कौन से पोजीशन में सोते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, आपकी लाइफ कैसी रही है पहले, कुछ दोस्त उस तरीके के रहे हैं क्या जीवन में. तो फिर बोलते नहीं नहीं डॉक्टर साहब गर्लफ्रेंड नहीं थी, हालांकि हाँ अब है मेरा, है डॉक्टर साहब क्या झूठ बताया आपसे. तो बोलते नहीं नहीं. अब मैं बोलता हूँ कि देखो आपको कंफर्टेबल है तो बताइए, लेकिन आप बताओगे तो मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि ये तो मेरे साथ ही जाएगी इन्फॉर्मेशन. एक दूसरी बात, आपको मैं ठीक करने में बहुत आसानी मिल जाएगी मुझको. आप समझ रहे हो. तो देन इट बिकम्स इजी. जैसे अभी जेनेटल वॉर्ड्स है, तो देन आई डू आस्क कि साहब कुछ गलती हुई है आपसे, माफ करना, आपको बुरा ना लगे, आप
हुआ था। नहीं डॉक्टर साहब, फिर खुद को लोग बोलते हाँ डॉक्टर साहब क्या है, मैं ऑफिस में रहता है कुछ तो होता है, हो जाता है सर, मैं ऑफिसर हूँ, तो कितना इंसान खुद को रोकेगा, है ना। तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये उधर से आया है, तो अडल्ट्रस आपके मन में आ जाता है ना। कितना मन को रोकेगा, तो लालच आ जाता है, ग्रीड आ जाता है ना, इंसान कितना रोकेगा ना। भाई रोकना है तो खत्म ना, रुकी पर ग्रीड आ जाती है ना, लालच है, आ गया। समझ रहे हो, तो इतना इजी, देन वी टेक द माइंड, वी डू नॉट गो टू लाइक गनोरी एंड ऑल दैट, वो अपने पास में है नहीं, वो उतना, वो डॉक्टर हनुमान वगैरह उनकी ग्रेटनेस थी कि जो उस पर भी दे पाते थे, लेकिन अपने पास में एक माइंड इतना इवॉल्व हो चुका है माशाल्लाह से कि अपन माइंड से ले सकते हैं। एंड देन वी अंडरस्टैंड कि अरे यार ये तो मोटा आदमी है, इसकी बीवी पतली है, तो मतलब इसके घर पे नहीं, he is not really must be happy at home or whatever. So maybe he wants a partner where he will be more comfortable, or maybe he wants an exciting thing in his life. So what's at any place, like what's on the genitalia means insult or appreciation. So that part is not appreciated. है ना? तो your girlfriend is going to appreciate anything that you have, or the person who's coming to you for physical pleasure is going to appreciate that from you. So then you go for that. ओके, तो फिर ये अपने को इमेज फिर उसकी धीरे धीरे समझना होता है कि इमेज एज इन, फिर दैट यू हैव टू मेक द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द सिचुएशन दैट द पेशेंट इज इन. For this, you don't have to really ask questions as to how is your life with your wife and how was your life with the encounters that you had in life. ये ऐसा तुमको लगता है कि तुम बहुत मस्त सवाल पूछ रहे हो, तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो, तुम पेशेंट को अनॉय कर रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उसको अनकंफर्टेबल कर रहे हो, होम्योपैथी को बदनाम कर रहे हो तुम, बिकॉज ये हो जाएगा कि वो फिर दूसरे होम्योपैथ के पास जाएंगे ही नहीं. तो मेरे पास में इतने लोग आते हैं कि बोलते डॉक्टर साहब ऐसा होता है ना कि इनके सवालों के जवाब क्या देना, और ये ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे सजा दे रहे. जैसे मेरा एक पेशेंट था, been to very great homeopath. The lady left the husband, okay, because the husband was very bad according to her, and the daughter was very small. But the lady knew that कि मैं इससे केस हार जाऊंगी और मुझे तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं छोड़ी तो मैं मर जाऊंगी, ये बेटी को नहीं मारेगा और ये बेटी का ख्याल रखेगी. उसकी दादी मतलब उसकी सास भी है जो बेटी को अपनी तरफ कर रही है. तो ये लेडी ने 3 साल की जो लड़की को छोड़ दिया, तो एक होम्योपैथ के पास गया, तो होम्योपैथ का रिएक्शन था तुमको शर्म नहीं आएगा बेटी को छोड़ते हुए. अरे बाप. तो लेडी ने बोली हाँ आई थी शर्म, लेकिन क्या करूं, जान का सवाल था. And the lady did not take his medicine. She paid his money, paid money, and she came back to me. And then I said, and she said कि डॉक्टर साहब इस तरीके से उसने बोला और चीख के बोला था, लाज नहीं वाटली का तुम्हाला सोडायला. I said यार who are you, ये मॉरल पॉलिसिंग नहीं करने का गेम, ये भी चीज आप समझो. ये मॉरल पॉलिसिंग जो करते हैं ना अपन लोग, वो भी उससे भी आप लोग प्लीज बचिए, ये भी चीज मत कीजिए. We are not to judge anyone, we just have to prescribe. Please remember. Give me a second. आसिमा 5 मिनट. ओके, तो ये भी ऐसे रिएक्शन देने से प्लीज बचो. तो यू हैव टू बी मोर एम्पैथेटिक टू द पेशेंट, लाइक आई ऑलवेज से empathy, homeopathy is equal to empathy. Anyways, now that we are learning what Dr. Animal has said and what evolution that we have gone through, we'll have to really combine, but follow what Dr. Animal has said, but convert it to really interpret it well, by the situation, the state where you live, in which people you practice. Okay. Now, any causes of disgraceful character which the patient is not like to confess, at least voluntarily. The patient would बोला है ना, skillfully question. We were talking about skillfully questions. अब ये मैं थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ, बाकी चीजें तो आप खुद भी स्किल तो यू हैव टू डेवलप. और अगर आप ऐसे भी है तो रिपीटेडली आप जो भी जिन के भी आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, जिन के भी आप लेक्चर्स अटेंड करते हो, तो वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उधर भी आप ध्यान रखा करो. किसी से भी, कोई भी डॉक्टर हो, फिर उनको आपको लगा कि इसने गलत तरीके से पूछा था,
वो मत करो। उसके किसी सवाल पर पेशेंट ने सही जवाब दे दिया तो वो सवाल आप लिख के रखो कि व्हाट क्वेश्चन द डॉक्टर इज आस्किंग and at what point the patient doctor is asking question or just talking, responding. It's not that every time you don't have to really frame the question, right? You don't have to frame the question, you have to respond. You're just supposed to be with the patient. Converse, not question. Please remember, converse, not question. Your question should also be a conversation. Like you are, like मैं हमेशा एक example देता हूँ कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठे हो यार यार नहीं नहीं आपकी शादी माशाल्लाह से you didn't fall in love and all then but how you talk to the girl or how the girl asks you the thing आपको क्या पसंद है आपको आइसक्रीम पसंद है ना फिर वो बोलती नहीं जी आइसक्रीम नहीं मुझको चाय पसंद है ना तो इस तरीके से वो कंफर्ट डॉक्टर का पेशेंट के साथ में आना चाहिए पेशेंट का डॉक्टर के साथ में आना चाहिए उस तरीके का आपकी बातचीत पेशेंट के साथ होना चाहिए हाँ आप अगर खड़ूस है लाइकोप्रेम टाइप के जी अच्छा आपको स्वीट पसंद है क्या वो वाले अगर आपको कालिका टाइप के ना कन्फर्मेस्ट टाइप या फिर ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज वाले लाइको है उस तरीके से आप क्वेश्चन उठेंगे तो फिर वो अलग हो जाता है देन इट इज लिटिल डिफिकल्ट ऑफ कोर्स वैसे भी डॉक्टर्स के पास में पेशेंट आते हैं जिनको डांट सुनने वाले डॉक्टर कड़क डॉक्टर अच्छे लगते हैं तो वे उनका भी चलता है लेकिन वो सही तरीका नहीं है पेशेंट से डील करने का प्लीज रिमेंबर यू हैव टू बी लाइक अ फ्रेंड but keeping your distance, maintaining the decency of the conversation, maintaining the decorum of your being, your demeanor also matters. Okay, to this belong poisoning or attempted suicide, onanism. Onanism is again indulging into physical sexual activities, indulgence or in ordinary or unnatural debauchery, ordinary or unnatural. ठीक है excess in wine, cordials, punch and other ardent beverage, coffee, है ना आजकल क्या लेते हैं आप लोगों क्या पीते हो एनर्जी ड्रिंक over indulgence in eating generally on some particular food of a hurtful character जैसे ना आप मोमोज बहुत खा लिए या पिज्जा बहुत खा लिया है ना तो होता है ठेचा सादी भाषा में ठेचा बहुत तीखा होता है आपने तो ठेचा चटनी हार्मफुल है ना वो भी ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि पिज्जा और वड़ा पाव ही खराब है आपकी चटनी भी तो खराब है ना आप बहुत ज्यादा खा लोगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि चटनी बहुत अच्छी चीज है ये नहीं है 5 मिनट खत्म थे ओके हर्टफुल कैरेक्टर्स इन्फेक्शंस एंड वेनेरियल डिसीजेस और इच अनफॉर्चुनेट लव ये तो आपका जेलसी डोमेस्टिक इनफेलिसिटी है ना वरी ग्रीफ ऑन अकाउंट ऑफ सम फैमिली misfortune, ill usage, balked revenge, injured pride. Just we spoke about the case. Embarrassment of pecuniary nature, मतलब पैसा गया. Superstitious fear again. Hunger can be both. The hunger like hunger of the soul, hunger of the sex, hunger of the stomach. All three. Or an impression or an imperfection in the private parts. Right? Some people do have a rupture, a prolapse, so forth. So there are many of them. Okay, so let us stop here. Any questions till here? बाकी वाले slides जो है वो हम next lecture में लेंगे. उसके अंदर because it is to do with female case taking, I would like to take one more lecture on that, inshallah. So next month, second Sunday or second Thursday or whatever Sunday is available in the next month of August. Okay, Mansi, I would like to wind up now. Any questions? Any questions? All right, give you 2 minutes to ask questions. I believe there are no questions. Okay, you can ask the questions on YouTube. Talk to Dr. Pranita if you really want to learn from us. We do take live cases. We do take lectures where we have recorded cases and follow-ups and many things. One. Second thing, go watch our YouTube channel, United Minds by PHF. You can ask any question there. My number is also there. You can ask any PHF in my number. You can Google my name, Dr.Liyakat Namole. You will get my phone number. You can ask me questions about the lecture here, otherwise also. Okay? But suitable time. ये नहीं कि सर सीधा क्वेश्चन मत करो
phone करने के बाद पूछो, sir, do you have 5 minutes for me? I would like to ask you questions, please. Then I would, if I'm free, I would answer. If I'm not, I would say, okay, I'll call you at 5 or 6 timing. Okay. If I forget to call you back, please do call me back. I would love to really share whatever I know. I would love to solve your problems. Okay. Till I'm alive, ask me. Yes, Mansi. Thank you, sir. Thank you so much for a wonderful session. Practical application of organon of medicine. Where while reading organon, we feel it bored, but in this way, we can really easily understand the organon, and we can apply in our practice. So thank you so much, and thank you everyone for joining. Thank you, my team PHF. Thank you. Thank you. God bless.